communication, and communication is important topic, that is models of communication. So first model आता है Aristotle का, Aristotle models of communication. Okay, so Aristotle, a great philosopher, it is in paper 2 English literature. So there is Aristotle's lot of work, Aristotle and Plato is asked. Now it is a communication model. He proposed the model before 300 BC. Okay, before Common Era, and found the importance of audience. So the question were asked on communication model. So which model given by whom, and Aristotle speak about which model of communication, what basic elements given by the Aristotle. Okay, so the Aristotle's mode of communication is formed with the 5 basic element. इसमें 5 basic element आते हैं. जिस मॉडल में Aristotle बात करते हैं स्पीकर, स्पीच, occasion, audience and effect. Aristotle advised to the speaker to build the speech for the different audience on a different time, different occasion. Okay, according to the occasion, time and the public in front of whom you are going to speak. So that he gave the suggestions and advices. So he talked about the 5 elements: speaker, speech, audience, effect. Okay, speaker, speech, occasion. Occasion is here. Okay, so speaker plays an important role in public speaking, because we commonly speak anywhere but in front of the mob, in front of the audience. When we are speaking, we are more conscious. Okay, the speaker must prepare his speech and analysis audience need before enter into the stage. Stage पे जाने से पहले we need a preparation, what to speak, how to speak. Okay, so his words should influence in the audience. Audience mind could not divert, so persuade their thoughts and towards him. For example, Alexander gave a brave speech to his soldier in the war field, defeat the Persian Empire. So speaker was the Alexander, speech about his invention, occasion war field, audience soldier, effect to defeat Persia. तो उसका असर क्या हुआ होगा? इट इज डिपेंड अपॉन द स्पीकर. स्पीकर किस तरह से बोल रहा है. ओके, देन लॉसवेल का मॉडल आता है कम्युनिकेशन पे. हेरोल्ड ड्वेड लॉसवेल, द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, he stated that convenient way to describe an act of communication is answer the following question. There was a question in the NET exam of who, what, how, which. This kind of the model of communication given by who. Match the following, match the pairs था. एक तरफ communication के जो मॉडल है जिन्होंने दिए उनके नाम एंड उनकी थ्योरी लाइक दैट. सो हु, say what, in which channel, to whom, with effect, it is given by the Loswell. Loswell's model में आता है. Okay, then Loswell is talking about who communicator, say what to the into his message, in which channel or the medium used by him, and to whom and the receiver, with what effect and effect. This model is about the process of communication and its function to the society. According to Loswell, Loswell says there are 3 functions for the communication. जैसे अरिस्टोटल 5 elements की बात करते हैं, Loswell जो है 3 functions की बात करते हैं. Surveillance of the environment like CCTV, a correlation of the component of the society, and cultural transmission between the generation. Loswell model suggests that the message flow in the multicultural society with multiple audience. The flow of the message is through various channels, and also communication model is similar to the Aristotle's model. Okay, so in this model the communicator component refers to the research area called the control analysis. Says what is referred to control analysis, which media or the channel is used, to whom is refers the communication, and what effect of that. For example, CNN news की बात करेंगे हम. A water leak from Japan, tsunami crippled nuclear power station. ऐसे अगर communicative कुछ news है, so who operated, which channel is operated, so who, TPOC is the operator, what, radioactive material, channel कौन सा है, CNN न्यूज है, whom किससे बात कर रहे हो, पब्लिक से, इफेक्ट क्या है, अलर्ट द पीपल अबाउट द कैलेमिटी. ओके, सो एडवांटेजेस क्या है लॉसवेल के मॉडल के. लॉसवेल के मॉडल का इट इज इजी एंड सिंपल, इट सूट फॉर ऑलमोस्ट द ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज द कंसेप्ट ऑफ इफेक्ट. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? फीडबैक नॉट मेंशन. इफ यू आर वाचिंग द न्यूज वी कांट गिव द फीडबैक देयर. नॉइज नॉट मेंशन एंड लीनियर मॉडल. ओके,
देन आता है शैनन एंड वीवर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. फेमस मॉडल है. इन 1948 शैनन वाज अ अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, एंड वीवर एज एन अमेरिकन साइंटिस्ट. बोथ ऑफ देम joined together to write an article in Bell System Technical Journal called A Mathematical Theory of Communication. So the model is given by Shannon and the Weaver. Okay, so it's also called the Shannon-Weaver model of communication. इन दोनों ने ये contribution दिया, इसलिए इस मॉडल का नाम ही है शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. The model is specially designed to develop the effective communication between sender and receiver. They also find the factor which affecting the communication process called noise. Okay, so at the first model they develop and improve the technical communication. Later widely वो apply करते अपने field of communication में, and they deal with the various concept like noise. source की बात करते हैं, transmitter, noise, channel, message, receiver, channel, information, destination, encoding, decoding. These are taught by him. So who is sender now? The originator of the message, जो मैसेज कंस्ट्रक्ट करता है, वो हो गया सोर्स. इनकोड, जो उसको पढ़ रहा है, जो ट्रांसमीटर, वो कन्वर्ट द मैसेज इनटू द सिग्नल, वो चला जाता है फिर बाइनरी डाटा में. जैसे ईमेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, जो भी है, फिर वो पढ़ेगा, इनकोड करेगा उसे, उस मैसेज को बनाएगा, जैसे इनकोड करेगा सेंडर, और फिर वो भेज देगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, एंड देन द रिसीव हो जाएगा रिसीवर को. रिसीवर को जब मिलेगा वो डिकोड करेगा. सो द रिसेप्शन प्लेस ऑफ द सिग्नल एंड द कन्वर्ट सिग्नल इनटू द मैसेज. ओके, सो रिसीवर द डेस्टिनेशन from the message to the sender. So this is how the model is given by the both of them. इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, थॉमस मेड कॉल टू हिज असिस्टेंट. थॉमसन है, वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, कम हियर, आई वांट टू सी यू. ड्यूरिंग हिज कॉल नॉइज अपीयर, ट्रांसमिशन एरर इज देयर. ओके, सो सेंडर हो गया थॉमसन, इनकोडर हो गया टेलीफोन क्योंकि उसने कॉल किया, चैनल हो गया केबल का इस्तेमाल किया, नॉइज डिस्ट्रैक्शन आ गई, देन रिसेप्शन टेलीफोन असिस्टेंट, रिसीवर हो गया उसका असिस्टेंट जिसने उसने कहा कि आई वांट टू सी यू नाउ. ओके, सो दिस इज हाउ द मॉडल इज वर्क. क्रिटिसिज्म भी हुआ है शैनन वीवर मॉडल के कम्युनिकेशन पे. पहला, जो वन ऑफ द सिंपलेस्ट मॉडल एंड जनरल अप्लाइड टू वेरियस कम्युनिकेशन थियरीज. दूसरा कहता है इट इज मोर इफेक्टिव टू पर्सन एंड ग्रुप टू ग्रुप. ओके, देन द मॉडल बेस्ड ऑन सेंडर एंड रिसीवर. ओके, then Osgood and Scram's model of communication. Now encoder, interpreter, decoder, message, and how the work and how the cycle or the circular mode of communication is explained in this model. Now encoder, who is encoding and send the message. Okay, और द मैसेज ओरिजिनेटर. सपोज हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करें, तो मैंने मैसेज किया मेरे फ्रेंड को, तो मैं हो गई इनकोडर क्योंकि मैंने इनकोड किया, मैंने चैनल का इस्तेमाल किया व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया का, जिसे भी वो मैसेज मिला वो हो गया रिसीवर, जो उसे डिकोड करेगा, पढ़ेगा, उसे समझेगा. ओके, इंटरप्रेटर, पर्सन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट. ओके, सो दिस मॉडल ब्रेक द सेंडर एंड रिसीवर मॉडल. इट सीम्स कम्युनिकेशन इज a practical way. It is not a traditional model. It's happened within self or two people also. Have the some advantages also and some disadvantages also of this model. Scrum and model of communication के advantages की बात करें तो इसमें dynamic model है, show how to situation can change. It shows the why redundancy is essential and there is no separate sender and receiver. So this is how the Shannon and Scrum's model. So these were the three more important: Aristotle, Shannon, Scramble. There are more models also we will discuss in the next video.